बड़े दिन हो गए थे, मैं सोच रहा था कि कोई चोरी का इंसिडेंट नहीं आया अमेरिका में, कोई इंडियन भाई अपना इंडियन मैन, कोई यूजुअली औरतें होती ना जो चोरी करती हैं टारगेट में और वॉलमार्ट में चोरी करती पकड़ी गई हैं कितनी, पिछले 6-7 महीने में 10 इंसिडेंट आ गए थे ऐसे। तो देखो आ गया एक इंसिडेंट, आपको आज दिखाता हूँ। 2024 के अक्टूबर का इंसिडेंट है, पर वो जो बॉडी कैम फुटेज है 3 दिन पहले रिलीज़ हुई है, तो इसको आप नया इंसिडेंट समझ के देखें क्योंकि हुआ 3 दिन पहले रिलीज़ है। बॉडी कैम फुटेज एकदम रिलीज़ नहीं होती है, जब केस सारा सेटल हो जाता है ना तब रिलीज़ होता है। तो आपको आज दिखाते हैं जिसमें एक इंडियन स्टूडेंट और एक नेपाली स्टूडेंट दोनों मिलकर चोरी कर रहे थे वॉलमार्ट में। Watch what happens when 2 immigrants get caught shoplifting while on student visas. Hello. How are you? Good, how are you? Good. Good. Here we have some student IDs. So students from UWS. Okay. They were in our store today. They selected all these items. They went through the register 47, but they only paid for half their stuff. They were putting stuff in bags. They would scan an item, put some stuff in a bag, scan one item, and they kept on doing this. Scan one, put 3 or 4 in a bag. Okay. And they did this to their entire transaction. They're just kind of going through to see what's paid for and what's not paid for. Everything that's not paid for so far is over there. What is paid for is right here. Do you guys have state IDs? That's a student ID. I don't have driver's license. You don't have a driver's license? Okay. And then you don't have a driver's license. Do you have driver's license or an ID out of a different state? No? Okay. क्विक बैकग्राउंड दूंगा आपको। तो ये 2 बंदे स्टूडेंट्स हैं, एक इंडियन बंदा और एक नेपाली बंदी, वॉलमार्ट में चोरी करते पकड़े गए। और चोरी ना बड़ी क्रिएटिव तरीके से करी इस बारी कि एक आइटम को स्कैन करके पे कर दिया और 3-4 वहीं की वहीं बैग में डाल दी बिना पे करे। एक को पे किया 3-4 बैग में, एक को पे किया 3-4 बैग में। और कैसे पकड़े गए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ अमेरिका। अमेरिका में हर दुकान पे कैमराज होते हैं, जो सीलिंग में होता है ना CCTV, वो तो होते ही है। जो चेकआउट मशीन्स होती है ना जिसमें आप एक्चुअल में पे करते हो, वजन वगैरह करते हो, सामान का पे करते हो, उसके मशीन के ऊपर भी चेकआउट कैमराज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ चेकआउट भी होता है। बंदों से भी आप चेकआउट करवा सकते हो, आप सेल्फ भी खुद भी चेकआउट कर सकते हो। तो बहुत लोगों को लगता है सेल्फ है, कोई देख नहीं रहा तो स्कैन करके निकल लेते हैं। हर कोई देख रहा है। सेल्फ जो मशीन होती है ना सेल्फ चेकआउट की, उसके ऊपर ये कैमरा होता है जो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। वहीं पर ये दोनों फंस गए, साथ में कर रहे थे स्कैनिंग। एक स्कैन करी 3-4 बैग में, एक स्कैन करी 3-4 बैग में, वहीं फंस गए लोग। और गाइस ये जो सबटाइटल्स आ रहे हैं ना नीचे वीडियो के, इसको इग्नोर कर दो, बहुत ही बकवास सबटाइटल्स आ रहे हैं। आई थिंक AI जनरेटेड है। AI से कभी कभी तो कितने वाहियात सबटाइटल्स आते हैं। वो बोल रहा है एंटायर ट्रांजैक्शन, वहाँ पर आ रहा है प्लेयर ट्रांजैक्शन, कुछ भी आ रहा है। तो सबटाइटल इग्नोर करो, मैं आपको समझाता रहूँगा, बाकी आप खुद भी समझदार हो, खुद भी समझ जाओगे। Yeah, can I see your passports? We have it in our room. Huh? We don't have it right now. Where are your passports? In room. In the dorms? Okay. Mark myself on scene. I can show you my picture. Yeah, that would be great. Can you guys tell me why you were... I can show you the I think I was on my account. It was over minus. It looks like you have $840 in your... It's a used. At the available is minus. Huh? Available is minus. It's the used. So you guys are shoplifting because you didn't have any money? I didn't have money. Didn't have money? Okay. Why are you guys getting like dishes and stuff like that? We don't have anything to do. Don't have anything? No. Sorry about that though. Okay. Do you have a picture of your passport? So he said that they were shoplifting, they didn't have any money to pay for anything. Like scan one. Are you able to run a name from a Republic of India passport? Last name is spelled Paul, Adam, Tom, Edward, Lincoln. First name is spelled King, Robert, Ida, Sam, Henry, Ida. Middle is spelled Robert, Adam, John, Edward, Sam, Henry, Boy, Henry, Adam, Ida. So you're both from India then? No. No. ऑलराइट, 2-3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले तो कहते हैं मेरे पास मनी नहीं है, पैसे ही नहीं है, समझा जा सकता है। बट अगर गाइज पैसा नहीं होता तो कोई चोरी करने थोड़ा ना निकल जाता है भाई। ठीक है, हार्डशिप है। और देखो सबसे पहली बात, स्टूडेंट वीज़ा पर हो तुम लोग। स्टूडेंट अगर पैसे नहीं हैं तो अब दूसरे देश क्यों गए पढ़ाई करने? तभी तो स्टूडेंट लोन्स होते हैं, तभी तो महंगे स्टूडेंट लोन लेते हैं इंडिया में लोग, ताकि वो अमेरिका में पढ़ाई करने आ पाए। वो लोन का पैसा कहाँ गया? लोन नहीं लिया,
तो कैसे आ गए आप लोग? ऐसे तो कोई भी बंदा उठ के आ जाए अमेरिका में, चलो पढ़ाई करने चलते हैं, पैसे नहीं है चलते हैं, ऐसा नहीं होता ना। पैसे होते हैं तब आप दूसरे देश में जाके पढ़ाई करते हो, वरना अपने देश में पढ़ाई करते हो। और लोन लिया था तो उसके पैसे कहाँ गए? वाई डोंट यू हैव मनी? और अगर नहीं भी है, चोरी करने नहीं निकल जाते हैं, और तरीके होते हैं। अपनी फैमिली से बात करो, कोई जॉब वॉब कर लो, कैंपस पे तो जॉब कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि चोरी करने निकल जाओ। एक चीज़ और बता दूँ, अब जैसे इसने इसका नाम उसने वो किया ना, अल्फ़ाबेटिकली उसने प्रोनाउंस किया, तो उसका नाम निकला कृषि रमेश भाई पटेल। मैंने वो एक्चुअली सारा जोड़ के आपको बताया कि जैसे उसने बताया R फॉर दिस, A फॉर दिस, तो सारा जोड़ के कृषि राजेश भाई पटेल। Okay. How does it work with your visas if you get convicted of a crime? Does that affect your visa? For someone in the US on a student visa, a shoplifting charge can carry consequences far beyond the criminal penalty. Because theft is generally classified as a crime involving moral turpitude under immigration law, it can trigger visa revocation, service termination, inadmissibility, and even removal proceedings. If there is a conviction, including certain plea deals, the visa can be revoked. DHS may initiate deportation proceedings. Future visas can be denied, and long-term green card eligibility can be severely damaged, even if the jail sentence is minimal. In some cases, even an arrest without a conviction can lead to visa cancellation, denial at renewal, problems at the port of entry, or mandatory consular review, since immigration consequences often attach to an admission of guilt or plea, not just time served. He's negative FDIC. What's your name? Krishi. Stand up, Christian. 518 Superior. I have another name to run. It's going to be from a Nepal passport. Okay, have a seat. Is this your bag? There's a bunch more stolen merchandise in there too. So you're under arrest right now, okay? You're under arrest for theft. So did she have anything on her, or did she have a cart full of stuff? Yeah, they were together. They were She both was doing it. one of the. She was pushing the cart. Maybe he was. I don't remember. It was a together thing. Okay, I'm going to give you the opportunity right now to come clean with me. Whose idea was it to do this? So we had two different separate bills. I paid first, and then he went second. But when he was scanning, he checked his Apple account, and he didn't have enough money. And then he really needed the food, so we didn't have any other option. So. What's a good phone number for you? 609. So did she pay for any of her merchandise at all? 817. Some of it. So to gather this right, they were shopping together. They went through the line They're together. scanning together. They were scanning together. They were both putting things in the bag that were not scanned. Together. And Everything was. it was every other item or something like that. They scanned one and then they put Scan three one bag, unscanned Yeah. in a bag. Yeah. I can pull it up. So she at some point does pay something though, or is that? She does pay something, and he does pay something. Oh, they both do pay a Yeah. portion of it then. Yep. I had no idea about the stuff in the backpack. Do you have any stolen things in your purse? तो इन दोनों ने मिलके चोरी करी है। जैसा कि उसने पूछा कि किसका आइडिया था, किसने बोला कि चोरी करनी है, तो दोनों ने मिलके चोरी करी है। दोनों ने एडमिट कर लिया, मिलके थोड़ा थोड़ा कैश, थोड़ा थोड़ा पेमेंट किसी इसने करी, कभी इसने करी, लाइन में साथ में थे, चेकआउट साथ में कर रहे थे, तो मिली जुली एक्ट है दोनों की। और अभी आगे देखना, इस बंदी के बैग में से भी चोरी का सामान निकल रहा है। मतलब जो कार्ट में डाला चोरी का वो तो था ही था, बैग में भी डाल लिया। गाइस यहाँ पे मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगा और आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं गाइस। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग आते हैं चैनल पे, वीडियोस देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करें गाइस, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँगा। I don't want to dig if you just want to hand me your stuff. Here. Oh, you're talking.
I don't want to be digging around in her purse. It is yours. Okay. I don't. Those are yours or no? Well, this one has a price tag on it. The And still one that's sealed. in the side pocket on my own. Okay, but these ones aren't? That's Yeah, this is sealed. What do you think? A citation or downtown? Either or is up to you. I think that I'm looking at all the items in this cart, and for people who don't have money right now to buy things, which obviously true, these aren't necessities. Makeup is not a necessity. That Caribou coffee probably costs you at least $5. No, I have a meal plan in school. A meal plan. Either or. Makeup, dishes, things like that. If you guys don't have money and you need food, that's something I can understand more. But these aren't necessities. You're stealing Yankee Candle Scentsies, makeup, dishes. dishes off of it because in the dorm where we Dishes are not a necessity. If you don't have money right now, you don't go buy a nice dish set with money you don't have. You don't do that. Items, at least for the stuff that she put in her purse, that's probably at least $50 of merchandise in there. Yeah, I would agree. With the stuff. How much would you estimate was stolen? Three? Yeah, somewhere around there. Not over 5. I don't think. Have you guys been convicted of a crime before? Have you guys had contact with the police before? Did they get Okay. both the returns back to you on these two? They said negative for both. I can confirm that. Him for sure he's negative. I ran her name and I don't know if she gave me a return. Neither of you have ever been arrested? Okay, you're not. Alright, I'm gonna have you stand up. Place your hands behind your back. I'll have you search her if you don't mind. Do you have anything on your person that's gonna cut me, poke me, harm me, anything like that? Okay. Any merchandise on your person that we haven't found yet? So both of you are banned from Target, Walmart rather. You can never come back to Walmart ever again. All right? Or for a year, actually. Can't come back to Walmart for a year. Do you understand what I'm saying? All right, you're both being arrested for theft. You're both going to go to jail. They're going to return these items and put them back on your card. Okay? Does that make sense? You said no permission for anything. Okay, are you able to get an itemized What's that? receipt of all the items that you did not Can you have pay what? for? Yes, that's. Yeah, when you get to jail, they'll give you some water. Start watching. No, we're good. Yeah, so you folks will return that then and put it on your card? Yep, it'll go back to his. Okay. All right. Thank you. Thank you. See it in there? So it's सारी कैलकुलेशन करी, सारा सामान जोड़ा, बोल रहे थे कि 500 के नीचे का सामान होगा, $500 के नीचे का. बट सीरियसली बताओ, वॉज इट वर्थ इट? जैसे कि वीडियो में बताया, स्टूडेंट वीज़ा पर हो आप लोग, दूसरे देश में पैसे नहीं हैं तो चोरी नहीं करते. और जैसे पुलिस वाले ने बोला, अगर पैसे नहीं हैं तो आप मेकअप नहीं चुराते, फूड चुराते हैं यूजुअली. अगर आप मेकअप चुरा रहे हो ना तो आपकी इंटेंशन पैसों की नहीं है, इंटेंशन कुछ और है आपकी. मेकअप, नाइस डिनर सेट, यांकी कैंडल्स, वो जो फ्रेगरेंस वाली कैंडल्स होती है ना जो जलाते हैं घर में, खुशबू आती है जिससे. अगर पैसे नहीं है तो आप वो चुराओगे. तो इंटेंशन कुछ और है डेफिनेटली. उन्होंने बस पैसे जोड़ रहे थे, लगा रहे थे कितनी वैल्यू होगी, कॉस्ट, ताकि वो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली चार्ज कर पाएँ.
So it was 590 then? Yes, before tax, $5.90. All right. Cool. All right. Perfect. Thank you. All right. Yep. Bye. When you book her in, it's going to be felony level theft because it came to 590 before tax. I didn't think it was going to be a felony amount. Yeah, well, as soon as I saw the makeup coming out, I knew it was, I was like, this is going to rack up quick. Jeez, I didn't realize that stuff was that expensive. He should have a dorm address on Catlin. And then he was identified with his India passport. I'm sorry, what's that? He was identified, I saw a screenshot of his India passport on his phone. That's how I identified him. I knew who he was. I'll go sit back. So you committed a felony, so it's not a book and release. It was over $500 worth of theft. We didn't know, but my partner was informed it was over $500 worth of theft, so that makes it a felony. So you guys have been arrested for felony theft, and that's what you're in jail for, and probably gonna have to see a judge before you're released. I did not take worth $500. We had two different things. Like, I'm being honest with you, I took very less stuff. Mine was not $500. You can double check with the Walmart too. Those are not my stuff. I know we were together, but he had his own stuff. I had my own stuff. And I can inform my partner what you're telling me, and I want to let you know that you are in custody right now, so anything you say will be used against you. If I ask you any questions, I have to read you your Miranda warning. तो ये बंदी तो बढ़िया गेम खेल गई, पता नहीं कितना ट्रू है कितना गलत है। कहती हम दोनों ने साथ में मिलकर चोरी करी, पर मेरा $500 के ऊपर का नहीं है, मेरा तो थोड़ा सा सामान है, बाकी सामान उसका है, तो फेलनी उसको मिलनी चाहिए। और फेलनी बाय द वे सीरियस क्राइम, जैसे आपको मैंने पहले कई वीडियोस में बताया है, इट्स नॉट लाइक अनदर क्राइम। सीरियस क्राइम होता है तो फेलनी मिलती है, और हर स्टेट के अलग लॉज होते हैं। इस स्टेट में जहाँ पे पकड़े गए हैं 500 के ऊपर सीरियस क्राइम होगा, किसी स्टेट में 1000 के नीचे भी नहीं होता। तो यहाँ तो 500 के ऊपर जब फेलनी मिली ना इसको, ये तो सारा ब्लेम उस पर डाल रही है कृषि पे कि भाई मेरा तो थोड़ा सा सामान है, बाकी सारा सामान कृषि का है, उस बंदे का है, तो अगर फेलनी मिले तो उसे मिले, मुझे ना मिले। Okay, so I can bring up what you just told me to my partner. From what I could gather on scene, you both were going through the line together, you both were scanning items together, you both were packaging items together, and you guys committed that crime together, and it was over $500, which is where he's getting that number from. Okay? So I'll explain to him what you told me, but both of you are being charged with felony theft. What would you consider your race to be? Asian. Asian? What they steal? Makeup and various items, candles, silverware, food, a wide array of... From here? No, they're from India. Well, India and Nepal. They're students at UWS. What? Yeah. It's really weird. That is weird. ये थी पुलिस वालों की स्टेटमेंट जब उनको पता लगा कि कैंडल चुरा रहे हैं, मेकअप चुरा रहे हैं वॉलमार्ट से, स्टूडेंट्स दूसरे देश से आकर अमेरिका में ये सब चीज़ें चुरा रहे हैं। दैट वाज वियर्ड। आपको कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ और आप भी देखना कि लोग क्या सोच रहे हैं इस इंसिडेंट के बारे में। पहला ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में था, ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। कमिटिंग फेलनीज वाइल ऑन अ वीज़ा इज़ अ ग्रेट वे टू गेट अ फ्री फ्लाइट होम। इट्स ट्रू, आप फ्री फ्लाइट मिलेगी आपको इंडिया की डिपोर्ट जब होंगे आप लोग, तो इट्स नॉट वर्थ इट गाइज। स्टूडेंट वीज़ा पे इतना महंगा लोन लेके अमेरिका आना, पढ़ाई करने के लिए या चोरी करने के लिए? और पैसे नहीं है तो चोरी नहीं करता, अब किसी के पास पैसे नहीं है तो चोरी करने निकल जाए। और भी अच्छे तरीके होते हैं, ये लोग अच्छी फैमिली से दिख रहे हैं आप दोनों, तो क्या चोरी करने निकल जाएंगे? सेकेंड कॉमेंट, इफ़ यू शो लीनियंसी दे जस्ट डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो लीनियंसी मत दिखाओ इन लोगों के साथ। जेल देन डिपोर्ट, पहले जेल में डालो फिर डिपोर्ट करो। ज़ीरो टॉलरेंस इफ़ यू वांट टू फिक्स द प्रॉब्लम। टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी अगर प्रॉब्लम फिक्स करनी है, वरना अभी बचेगा कल फिर करेगा, इसको देख के कोई और करेंगे। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? आई होप आज की वीडियो से आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाले स्टूडेंट्स या वर्क वीज़ा पे जो भी, या टूरिस्ट पे जो भी कोई अमेरिका आ रहे हैं या दूसरे देश जा रहे हैं, मत करें ऐसे काम। कैमराज होते हैं हर जगह पे, और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, वीडियो छप जाती है भाई और दुनिया देख लेती है। ऑलरेडी इस वीडियो पे कितने व्यूज़ हैं।
थोड़े से पैसों के लिए, नॉट वर्थ इट। मेहनत करें, अच्छा काम कमाएं, पढ़ाई करें, जॉब करें, अच्छा नाम कमाएं अपना, अपनी फैमिली का। देयर आर अदर इंडियंस जो अच्छा काम करते हैं अमेरिका में। गाइस इसी के साथ ये वाली वीडियो मैं बंद करता हूँ और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, अगर आप ऐसे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में गाइस, बाय।